All right, so this session is again about signals. Maybe in future we can also talk about sensors and systems. Uh, Also given some assignments to all of you. Uh, if possible, you can also contribute in this assignment, right? So I will just give you another half an hour introduction. Then whatever you people have done, you can come forward and give the presentations, whatever you have modeled. So last 3 weeks, that is 3 sessions, what we were talking about is data types, operators, and last week we talked about the graphical representation. And today again, I asked you to, if you have done your own mathematical models, we can discuss why it is so important. Like I also said that I have some projects, some problem statements we can discuss, or if you have some ideas, let us discuss. There are some competitions are there. One is both the competitions, 31st is the last date of this month. One is the Nidhi Prayas Technology Business Incubation Center, our own campus. They have announced a competition for ideation. You don't need to implement, it's just idea if you have. Then they're funding up to 10 lakhs. Similarly, CIIA has announced some competition. Again, if you fill the form, you need to demonstrate in December, so you still have enough time. So I personally request every one of you have sent some hardware with you. Only idea now you post it there, as and when time gets, you can implement and demonstrate. So at least you have some certificate in your hand that you have presented, right? You have demonstrated. And if our luck favors, then no, they are awarding some 1 lakh rupees. TBI is giving up to 10 lakhs. But this not necessarily stick to SPTBA. All over India, 50 centers are there. So you can apply there also. IIT Bombay every year announces TIH. So there also you can apply. And they are IIT Bombay is in fact more liberal as compared to other people, right? They are encouraging the students. So I'm sure you have better chances of getting funded your ideas. But otherwise, I have some 3 ideas in my hand. Uh, so let us see. If, like I met some 2 3 people. If you are committed in working with me, then officially I will give you a letter today itself that you people are working on that some project. As and when you show some progress, from my side, I will give you some award, some money, something. I will give some just a token of appreciation. But the same thing will also apply for some funding agency. The fund comes, you will be benefited a much better way. Otherwise, also your energy won't be wasted because it could be patentable, it could be publishable, or your some benefits will be there in terms of resume building. Okay, so that's what is the today's topic is. So I suggest after lunch, those who are interested in these other events, please stay there. We will discuss. All right. So uh, why I am emphasizing on these data types and operators? The reason is it is not computer. I repeat again, it is not computer. It is other than computer. This is a computer, but it's other than computer. These are all called industrial computers. Okay, industrial computers.
They are actually equivalent to a supercomputer. Today, these controllers are equivalent to a supercomputer. If you look at on the internet, right, just search for what is the previous generation supercomputer. You just look for how many instructions, how many millions of instructions per second it is executing, how much amount of memory space they are having, right? So what is the operating speed they are having? Just these three parameters: how many instructions it is executing, how much memory space it has, and what is the operating speed. Just these three parameters, forget about 10, 15 parameters. These three parameters, if you compare yourself and today whatever you have in your hand, right, that 32-bit risk controller in your hand, dual core, that too ARM processor, you compare with the CPU, you will find that you have actually a supercomputer in your hand if you compare to the earlier generation supercomputers. So that's the beauty of it today, right? These are all the things which are affordable, right? Earlier they were costing lakhs and crores of rupees. Today they have become a single chip devices. That's the kind of integration happening inside the chips. And the next level of these things is like AI, ML inbuilt inside the chips. That's what we also expect the outcome of this entire uh, coding club is. Probably when you reach to your second year or third year, at least some smart algorithms, right? Some AI algorithms, if you implement inside that, then God knows you may get some your direct PhD admissions or something like that from world-class universities. In US, you have in even IIT also has this culture, but it is very rare. Otherwise, in US, this culture is there. If they like, if you have a research attitude and if you are working on cutting edge technologies, then you don't need to do MS. They directly take you to the PhD program, right? The moment if you join MS and if you show your potential, they convert into PhD program. So within 3 years of time, you will be awarded PhD. So what is PhD program in US? You don't need to pay any fees, not even a single rupee. They will pay you your stipend, right? Your day-to-day expenditures, they will pay because that is coming from the grads. So no PhD people pay the fees. So it is a self, I mean, you are funded your entire higher studies. So that's the reason I am saying when you do some projects, just bring some little bit of research attitude into your work rather than doing those conventional uh, or traditional computer applications where everybody or anybody is doing, right? Even MCA students also doing, BSc students also doing, diploma students also doing. Then, as an engineer, how you are different? Okay, maximum uh, contribution comes from the engineering background because engineering is what you have 4 years, 40 subjects you are studying. Okay, and that too with a highly mathematical background. Okay, but otherwise, all other degrees they do not have that much that kind of a rigorous mathematics, right? Rigorous various subjects. They are very narrow down, focused, general purpose in nature. So it is like a no, just a computer and its applications. But we are saying it's not applications of computer. We are saying contributing to the existing knowledge, existing system, where we are coming with some value addition to the existing system. That is called creativity. Okay, so we should bring it that aspect into our uh, some projects. So today I said I repeat in the sense just a few examples I demonstrate. Then I will take your presentations. Uh, what I was telling is that when you have worked on these examples, right? These operators, conditional statements, and all. You also written a program last time, right? Last to last time, where saying that different types of numbers you have defined, right? And then you have displayed on the computer screen. Okay.
Right. So when I asked you to do this data types and display the numbers, what you have displayed is by using some print statement, serial print statement. You have displayed these numbers, various data types on your computer screen. So what does it mean? If I say as a number, if you are displaying, then no, it could be a binary, it could be BCD, it could be hexa, it could be decimal, different formats. But I'm saying graphically, if I say when you are on your screen, when you are displaying these numbers, there may be somewhere some value it is representing on your screen. So you need to understand that when you are displaying on screen by using this software, Arduino software, that is using that serial terminal and serial plotter, serial monitor and serial plotter. What is the plotter is doing? You need to understand. The plotter is showing you x-axis and y-axis. Okay. Now the question is, do you have any control on x-axis? Right? Whenever you have used this program, when you are throwing the numbers on the computer screen, you can monitor these numbers either in text mode or in graphics mode. When you are using the text mode, then the way you see the same thing will appear on the screen. But sometimes the numbers are rounded, truncated, no, like that. Even mathematical operators, when you are using, some numbers are changing their behavior. That's what you have noticed. And it's bound to happen is because we do not have infinite resources inside this system, because this is not a computer, this is not a hard disk, this is not a server. This is a small, tiny controller with a limited memory. So it is rounding the numbers. So that is where the numbers may change. But I am saying the last week I said, no, don't display using serial monitor. Display these things using serial plotter. So when I use serial plotter, then these numbers are represented on your computer screen in a graphics mode. When you are saying graphics mode, now let's say this is your computer screen. Now what you have displayed is that you have displayed the numbers and the number position. Where is it on the? Our volunteers are not coming to do these things. So, yeah, yeah. What's that? Oh, yeah, yeah. You can come after afternoon, after lunch. I'm in the session now, that coding club session. So after lunch you can. Oh, yeah. Okay. Right. So I was saying that instead of displaying on text mode, I said put it in graphics mode. This is what even I'm also looking for some projects also. I have some industrial projects that at least the bare minimum thing is that you have this system, some number crunching is happening, which grinding is happening inside this, that I want to throw it because यहाँ पे monitor नहीं है ना keyboard है. So obviously what we expect is either my mobile should act as a monitor and keyboard, or my another laptop should act as a monitor and keyboard. So how communication takes place between this and that. That's what is one topic I said. वो bare minimum है हमारे लिए, because this topic itself is all about Internet of Things. When we say Internet of Things, we prefer wireless. To begin with, we will do with wire, but eventually, since every board is equipped with Wi-Fi inbuilt, we will do it Wi-Fi. So communication is must. We will be doing, but not immediately.
Slowly we'll do it, maybe after a few weeks. But right now I'm saying there is some computation is happening inside the device. I want to see what is happening inside the CPU. So how the numbers looks like. So there are two ways of looking the thing, either in terms of text mode or in terms of graphics mode. When I say graphics mode, what is the graphics mode? Graphics mode means my entire screen is divided into number of pixels, dots, pixel elements, right? How many pixels are there? Just for example, you can say 1024 pixels are there in horizontal line, and let's say 624, like that. Something you can say that. So when you say this, and now if I want to display some number, something, now I want to represent in graphics mode. Means what will you do? The screen you divide it into number of pixel elements, and based on the amplitude of the signal, the magnitude of the signal, somewhere that will appear as a dot, right? But my question I am repeating, do you have any control over x-axis right now? Do you have any control over x-axis? Who is deciding the x-axis when you have used these programs, right? So this is your time. X-axis is time. Now that time means what? Natural time. How many samples are displayed on the computer screen, right? Is it x-axis is time? Do you have any control over this? Yes, that is decided by the baud rate. Okay, you are setting the baud rate. Baud rate is nothing but number of beats per second. Okay, so if I increase the baud rate, then it is appearing very fast. If I decrease the baud rate, it is slowly plotting these things, whatever. But in any case, assuming that baud rate is a constant, we are not continuously changing. Some number we have taken, let's say 9600, which is some constant value. So in short, what I'm saying is my x-axis is fixed once for all. With that speed only, continuously, my numbers are sampled and will be displayed on the screen. So x-axis always, in our case, in these programs, whatever you people are doing, is time scale. Okay, that is called sampling, right? This is your sampling. Sampling means this is one sample, this is second sample. What is the time between one sample to other sample is delta t, right? Delta t. Delta t is depending on what? Baud rate, number of beats per second. ठीक है, इसको आपको frequency में चाहिए तो 1 upon this will convert to frequency. So whatever, either frequency or time. So that is your duration. अगर ये बढ़ाया आपने तो ये कम होगा, ज्यादा सैंपल्स मिलेंगे आपको. Understood? Okay. So this is time always in our case at this point of time. But what is changing is only amplitude. Understood? So last week, what I asked you is, can you generate, right, various numbers, right? Generate such numbers. Let's say if I say 0 to 100, I said generate numbers 0 to 100. So if you generate 0 to 100 numbers, right? Now if you display it on graphics mode, how it was appearing? Yeah, now you should at least imagine how it was appearing. At t is equal to 0,
You have generated one sample. Okay. After that, the is incremented by 1. So 1. This is amplitude, right? Yes. This is time. So next sample has come. Next sample has come. Next sample has come. Next sample has come. So up to 100. Okay. They are actually numbers. Please remember. They are actually numbers. They are actually samples. But then this software is only joining the numbers by using a line. It has inbuilt feature. So actually there are some other softwares where they don't join the line also. They will show you also without joining the line. But this has an inbuilt feature. Actually, it's okay just to understand the shape. So it is showing you a line. But in reality, actually there is no line. They are actually the dots. They are actually the numbers. So far, last week, what we discussed is the data types. In text mode, now also you can see. You have switch to your screen to text mode. They're actually numbers. If you switch it to graphics mode, plotter mode, they are looking like a signal. Okay. So what is the signal we call as a sawtooth waveform? Okay, we said it's a sawtooth signal. Understood? So what is a sawtooth signal? Where x-axis is just a time. X-axis is not, it's a time, which is not in your control. Right? You're not changing. No, it's a constant. What is changing is only amplitude is changing by 1, increment by 1. Now instead of this, if I ask you, now you output only 2 values, I said, just only 2 states, whatever may be. Let's say out 1 bar 50, 1 bar 100, 1 bar 50, 1 bar 100. I said you out. Or okay, out 1 bar 0, 1 bar 1, 1 bar 0, 1 bar 1, out like that. Or out 1 bar minus 1, 1 bar plus 1. No problem. Or out 1 bar 1.5 minus 1.5. Something. Anything is okay for me. That's why I told you. You use all data types. I'm okay. But I'm saying कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, ऑपोजिट डायरेक्शन पे आप 2 नंबर्स आउट करके देखो. उसको टेक्स्ट मोड में भी आउट करो, ग्राफिक्स मोड में भी आउट करो. ठीक है, प्लॉट करके देखो. नाउ टेल मी हाउ दिस लुक्स लाइक. इस चीज को आप स्क्रीन के ऊपर आप देखें, हाउ इट लुक्स लाइक. इज लुकिंग लाइक ए दिस a 2-state signal. Actually speaking, again I said, actually it's not a joined by this thing. ऐसा थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए, फिर actually ये था, but since the software is joining those dots by line, आपको ऐसा दिख रहा है. Whatever. Only 2 states. So what is the हो सकता है ये 100 है या 50 है, हो सकता है कि ये -1 है या +1 है, हो सकता है कि ये 1.0 है या -1.0 है, like that. Anything which is exactly 2 different values. 2 different values. That's all. एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो, एक बार ये. In between there is a time delta t. इसलिए वो एक डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है. Right? These are called one direction signal, single direction signal, 1D signal, 1D signals, one dimensional signal, 1D, one dimensional signal. So आपका जो मैं assignment दिया था वो यही था. Can you draw, design one dimensional signals? कोई भी आपका मन पे जो लगेगा वो नथिंग बट नंबर्स. वेरियस नंबर्स आप रिप्रेजेंट करो. वो नंबर्स हाउ डू यू जनरेट, दैट इज योर प्रॉब्लम.
तो आप एरे में, वन डायमेंशनल एरे में ले लो, एक एरे में भर दो वन डायमेंशनल एरे में, और एक 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 वैल्यू ले लो, पॉइंटर बना दो, एरे को पिकअप करो, थ्रो इट, ले लो, थ्रो करो, पॉइंटर को कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग, बस नो प्रॉब्लम. वन डायमेंशनल एरे, वन डायरेक्शन सिग्नल, अंडरस्टूड. तो व्हाट आर द क्लासिकल एग्जांपल्स? अपने ईसीजी, ईएमजी, ईईजी और एसी सिग्नल, व्हाटएवर हम ये जो नॉइस, माय स्पीच सिग्नल, राइट, रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल, डिस्प्लेसमेंट, these are all one dimensional signals. ये था अपना फर्स्ट असाइनमेंट. बट अगर आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन व्हाट इज टू डायमेंशनल सिग्नल्स, व्हाट इज थ्री डायमेंशनल सिग्नल्स, वो अपना स्कोप में नहीं है वो, बट फिर भी दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप, वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा. बट व्हाट इज टू डायमेंशनल सिग्नल? आज आपका ये टुडेज, बस टुडेज फुल स्टॉप, मैं अभी ये टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीक समथिंग एल्स. तो आज मुझे आप लोग सब वन डायमेंशनल सिग्नल यू आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट. अगर ये वन डायमेंशनल सिग्नल है, ठीक है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ईसीजी, ईएमजी वगैरह, टू डायमेंशनल सिग्नल मतलब क्या है? 2D signals means, what do you mean by that? 2D, 2D में x एक्सिस भी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, टाइम नहीं है वो, फिर x भी वेरिएबल है, राइट, f ऑफ आपका x कामा y दोनों चेंज होना चाहिए. अभी अभी इसमें क्या हो रहा है? ओनली एक ही चेंज हो रहा है. 2D में x भी, x वर्सेस y, y भी चेंज होता है, x भी चेंज होता है. एनी एग्जांपल? 2D, टू डायमेंशनल, ठीक है. 3D तो आपको मालूम है, 3D means you have not only x and y, 3D में x, y, z तीन चेंज होना चाहिए, मतलब और एक एक्सेस आपको z मिलेगा, x, y and z, थ्री वेरिएबल्स चेंज होना चाहिए. ओके, बस दैट्स व्हाई आई सेड, मैं कोई आपको अननोन थिंग कोई पढ़ा नहीं रहा हूं. जो आपका 10th स्टैंडर्ड पे या जो भी आपने स्टडी करके आया, वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूं एज ए इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, एज ए प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव. कि आप जब मैथ्स पढ़ते हो आपको बोरिंग लगता है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्या ड्रॉ कर रहा हूं वगैरह. बट आई एम सेइंग एक्चुअली ये इंजीनियरिंग है, ये रियलिटी है, ये प्रोडक्ट्स है. आगे चल के व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रेट अल्गोरिथम्स, राइट, एमएल, एआई वगैरह, जब व्हेन यू से, तब आपको पता चलेगा ये तो मैं तो 10th में पढ़ा था, ये तो मैं 11th में पढ़ा था, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया यार, अभी समझ में आ रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट. दैट्स द पर्पस ऑफ दिस कोडिंग क्लब, कि भाई टू एक्साइट, टू अंडरस्टैंड कि हम जो पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है इन एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो जिंदगी भर आपको वही करना है. लाइक आई एम सेइंग, यू कैन आल्सो बिकम एंटरप्रेन्योर. आप खुद अपना प्रोडक्ट लेके चालू कर सकते हैं. दे आर गिविंग 50 lakhs, दे आर गिविंग, आपको कंपनी चालू करना है. एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर आल्सो इन्वेस्टिंग, राइट, 5 crore, 6 crore, 60 crore, ऐसा अपने पास ही एग्जांपल्स है, कोई बाहर का नहीं बोल रहा हूँ, अपने टीबीए में एग्जांपल्स है, दोस हैव गॉट crores ऑफ इन्वेस्टमेंट. एमएसएमई 15 लाख दे रहा है, कोई भी आइडिया सेलेक्ट किया तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर. बट आई एम सेइंग, जिस वक्त आपको प्रोडक्ट बनाना है तब आपको समझ में आता है कि प्रोडक्ट जब बनाते हो हम लोग, कोई सिमुलेशन से नहीं होता है, ठीक है. You have to convert into some saleable thing, right? Okay, anyway, so I just show you इंटरनेट पे आपको दिखाने के लिए मैं वही देख रहा था, कुछ जो एप्लीकेशन में आपको दिखाया था. मैंने आपको व्हाट आई टोल्ड यू, आप कोई भी एक फील्ड ले लो, कोई बायोमेडिकल का ले लो, कोई मैकेनिकल का ले लो, कोई सिविल का ले लो, कोई मेटलर्जी का ले लो, कोई अर्थ साइंसेस का ले लो, कोई एग्रीकल्चर का ले लो, कोई फिजिक्स का ले लो, ऑल आर एनीथिंग, कोई भी सिग्नल ले लो, राइट. बट ये पॉपुलर है ना, ये तो हम लोग हर रोज देखते हैं, ईसीजी, ईएमजी वगैरह, यू नो, एवरी डे.
temperature, body temperature, human voice, वगैरह. So these are all our one-dimensional signals. This was the assignment I had given to you. Okay. So a quick representation के लिए. So what is 0 dimension? What is 1 dimension? What is 2 dimension? What is 3 dimension? अभी समझ में आया आपको? When you mathematically represent something, अगर आप एक नंबर थ्रो कर रहे हो वो 0 dimension, right? But if you are throwing a series of numbers, but only एक ही वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट? एक ही एक्सेस में चेंज हो रहा है, दैट इज 1 डायमेंशन. बट एक्स भी मतलब 2 डायमेंशनल एरे है, मतलब एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, समझो. फिर देन इट इज ए 2 डायमेंशनल. सो 2 डायमेंशनल क्लासिकल एग्जांपल मालूम है कौन सा है? Image. All image processing. Image means 2-dimensional signal, x and y, right? Image means what? A group of pixels. Each pixel जो है उसमें minimum 2 variables रहता है, उसमें minimum 2 variables, तब जाके आपका image बनता है. For example, एक image का 2 variables क्या होता है? एक जो है उसका contrast या brightness, right? Understood? Like that. So कोई भी 2 variables, लेकिन वो वही इमेज को और एक डायमेंशन ऐड किया आजकल हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं. तो 3 डायमेंशनल कहाँ आता है अभी अपने को? जो आपने 3D प्रिंटर आप जो कर रहे हो, दैट इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? तो अभी हम लोग 2D 3D का बात नहीं कर रहे अभी, बिकॉज दैट्स नॉट एट दिस स्टेज, वो प्रोजेक्ट नहीं है अपना. वी आर टॉकिंग अबाउट 1D. 0D जो है 2 हफ्ते पहले आप लोग किए, खाली एक नंबर लेके डिस्प्ले करके देखो हाउ द नंबर लुक्स लाइक. मैं अभी लास्ट वीक बोल रहा हूँ कि सिग्नल मीन्स ओके, नाउ I have something in my mind, ECG, EEG, EMG, or some earth signals, right? Vibration signals, electrical signals, audio signals, like that. All signals, uska aap model karo. So 1D. So this is what I asked. So now that's all from my side. What I will do is एक program जो आपको मैं last time run किया था. I have so many other, whatever आपने जो किया वही मेरे पास भी है. Then किसी का, yeah, somebody has gave me this program, sine program. I will load this program only. He has done sine, not only sine waveform. He said that he has generated 2 sine waveforms with a frequency of f to f, and then दोनों को ऐड करके he has generated addition of third signal. एक sine wave, एक उसका multiple of that frequency, that is a 2f. Then f को 2f को ऐड किया तो क्या बनता है, like that. And what is the significance of f, 2f, 3f, 4f, 5f? Means if I generate one fundamental signal of sine wave, okay, what I asked you is last time, generate various sine wave, triangular wave program. But then a classical example पूछा था, if I generate a sine wave, right? Pure sine wave, right? A pure sine wave. So where is the application of a pure sine wave? Our 230 volts itself is a pure sine wave, alternating cycle, where जो पॉजिटिव में
जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन नेगेटिव में भी रहता है. Okay, the same shape, everything. Now this, let's say one cycle, let's say 50 hertz. 50 hertz means 20 milliseconds. ठीक है. This is f. Assume this is f. Your f is, let's say, 50 hertz. So write a program and generate and show me this waveform. That's what I asked. Okay. Then what is the second modification I simply asked is, can you also generate a 2f? Means 100 hertz. Okay. Means 10 milliseconds. Another signal. Okay. Now what does it mean? इसके अंदर अभी ये जो सिग्नल है, इसके अंदर मुझे 2 साइकिल आना चाहिए. Double. ठीक. So that is the second. I said generate one more signal. Then I said दोनों को ऐड करके दिखाओ. f plus 2f ऐड करो. तो और रिजल्ट को डिस्प्ले करके दिखो. फिर ये सिग्नल दिखता कैसे? ठीक है. तो probably you will get a shape like this. Okay. So interestingly, if you keep on doing this, f plus 3f plus 5f ऐसा कुछ आप करते जाओ, एक टाइम आपको स्क्वायर वेव आए. So now you will understand actually square wave, how it is generated. It is a combination of fundamental frequency plus multiple of that frequency of a specific frequency component, specific, not all, specific frequency component will contribute to your square wave. वैसे ही जाके आपका ट्रायंगुलर बनता है, वैसे ही जाके साटूथ बनता है, वैसे ही जाके कोई भी शेप बनता है. That is called, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. So, तब जाके स्पेक्ट्रम, इसको निकाला आपने, स्पेक्ट्रम एनालाइसिस. स्पेक्ट्रम, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? मतलब इसको अगर मैं सच में देखूंगा तो आपको पता चलेगा इसमें f कितना है, 2f कितना है, 3f कितना है, 4f कितना है, 5f कितना है, एंड सो ऑन. ठीक है. ये सारे ऐड करने के बाद ही आया है ना. तो आप बताओ ये कितना है? ये 10 ग्राम है क्या? चलो मैं ऐसे जोक कर. ये 20 ग्राम है क्या? ये 0 ग्राम है क्या? चलो सब ऐड किया. उसको आटा को मिलाने के बाद क्या बोलते हैं उसको? ठीक है. सब मिक्स कर दिया आपने, फिर ये बन गया. तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ जो कंटेंट्स जो है उसका किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका वजह से ये बनता है. दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. तो ये आपको बहुत मजा आएगा एंटायर इंजीनियरिंग में. व्हाट इज सिग्नल, व्हाट इज वन डायमेंशनल सिग्नल, व्हाट इज टू डायमेंशनल सिग्नल, व्हाट इज 3 डायमेंशनल सिग्नल. आजकल 4D 5D का भी बात चल रहा है, लोग बात करते हैं. See, you can see up to 3D you can see in our Idea Lab. वहाँ we have the provision 3-dimensional camera we have. All our cameras are 2-dimensional cameras, only 2D cameras. They only give you X and Y. But we have 3D camera. So how a 3D camera works? वो आपका चारों तरफ घूमता है वो. So it's not only height and width, वो depth भी लेता है आपका. Understood? Height, width and depth. आपने अटेंड किया आइडिया लैब? आप में से कोई है? नहीं, कोई भी नहीं. I think 1 or 2 members आते हैं. मतलब they have taken that LLC program under Idea Lab. So they are doing that. आप लोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम. And it's a credit program, credit course. Understood? Okay, so that is interesting. So just quickly I will run the program. What you are supposed to, what
all of you are going to demonstrate whatever you have done. That completes at least one part of what we thought of mathematics, in short, numbers, mathematical expressions, and signals. Next week, I am planning systems, right? Then उसके बाद sensors. What is system वो बाद में डिस्कस करेंगे, आज ज्यादा हो जाएगा आपको. Today we'll discuss about only signals. Okay. Okay, so what mathematical expression you write is your choice. I'm not debating on it. I said it's your choice. Which data types you use it, integers, floating point, signed, unsigned, is your choice. Okay, but finally I'm representing by 1D, one-dimensional signal on my screen. Okay, so what I was telling is when you say serial monitor, for us it is only data representation by some data types. But the same thing, I mean, right now when it is throwing these numbers on the screen, with what rate it is throwing is decided by this bird rate. Okay, this factor. You have fixed, it is a constant, something sampling, you can say sampling, sample. इतना स्पीड से इतना सैंपल्स मुझे चाहिए. वो सैम्पलिंग रेट आप किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं? जितना मेरे पास मेमोरी है मैं उतना ही ले सकता हूं. ठीक है, मेरे 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 पास कुछ पेन ड्राइव है, सो मैं कितना सेव कर सकता हूं, मैं उतना ही ले सकता हूं. आई हैव ए लिमिट, व्हाटएवर मेरा सीपीयू के अंदर जितना मेमोरी मैं उतना ही ले सकता हूं, मेरा कंप्यूटर में जितना मेमोरी मैं उतना ही ले सकता हूं. सो इट इज हाउ मेनी सैंपल्स पर सिग्नल यू वांट टू टेक. आइडियली स्पीकिंग इनफाइनाइट होता है. हर सिग्नल में इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन है जो हमसे हो नहीं सकता है, हम ले नहीं सकते, उतना स्पेस है भी नहीं. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो मैं इतना नहीं लूंगा, एक सेकंड में इतना सैंपल्स लूंगा. सो आई रिस्ट्रिक्ट टू दैट. दैट्स व्हाई आजकल आपका व्हेन यू बाय योर मोबाइल फोन्स, पहला चीज यही पूछते हैं कि भाई व्हाट इज, हाउ मेनी pixels are there on your screen, resolution of the screen. When you buy a TV, you will ask for how many pixels are there on your screen. Means number of pixel means what? Smallest dot, right? What is the significance of that? That dot has to be stored in the memory, right? मेमोरी पे स्टोर करना पड़ेगा ना. मतलब आपका स्क्रीन साइज बढ़ गया, पिक्सेल्स बढ़ गया, तो मेमोरी भी बढ़ेगा, डेटा बढ़ेगा, सीपीयू का कंप्यूटेशनल टाइम बढ़ेगा. ओके, व्हाट इज द एडवांटेज बिटवीन वन पिक्सल टू अदर पिक्सल? जो गैप है
वो बहुत ही छोटा है. So it looks like as if it is a original, but reality में कोई ओरिजिनल नहीं है, because it is a sampled. बट वो इतना फास्ट सैंपल है, एक सैंपल और दूसरा सैंपल के बीच में गैप इतना कम है, आपका आई को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा. हम लोग माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं जो पैथोलॉजी लैब्स पे, व्हेन यू सम ब्लड सैंपल्स वगैरह, जो अपना आई जो सेंस नहीं कर सकता है, डिटेक्ट नहीं कर सकता है, देन वी मैग्नीफाई करके देखते हैं. तो अब ये टीवी आप वहां से आप जब देखते हो, आपको बहुत ही बढ़िया अच्छा दिखेगा. आप नजदीक आके देखो, मुझे डॉट्स दिख रहा है इधर. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द परसिस्टेंस ऑफ योर आई. उस पे ही खेल है पूरा. फील फील गुड. सो वो ऑडियो है, वीडियो है, एनीथिंग इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ सैंपल्स. आपके पास कितना स्पेस है उस हिसाब से हम लोग, बट दैट विल लीड टू कॉस्ट आल्सो वगैरह. ठीक है, एनी हो. सो दिस इज आई सेड ए जीरो डायमेंशनल. बट वन डायमेंशनल मीन्स क्या है, इसको ही मैं प्लॉट कर रहा हूँ. सो व्हेन आई एम प्लॉटिंग, नाउ यू सी वो 3 वेव फॉर्म्स है इसके अंदर. एक ब्लू कलर है, एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है. ठीक है. ओके. सो 2 साइन वेव्स, एक वेव फॉर्म, दूसरा का 2f, right? Third is addition of these things is f plus 2a. That's what he has written that program. Like that, I ask you, you take some assignment, do something. Okay. Is that clear? Or the topic what we are discussing, why it is important? Okay. Are you excited? Okay, I know it is too early for you, but right now we are looking at as only just a significance. बट उसका एक्चुअल मैथ्स जो है आपको थोड़ा हायर सेमेस्टर पे और भी आएगा. सेकंड सेमेस्टर पे इमीडिएटली द मोमेंट इफ यू एंटर इनटू सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर, सॉरी सेकंड ईयर, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. पहले सब्जेक्ट ही वो है आपको. ठीक है. उसके बाद देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. यही यही आपको वापस आने वाला, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. देन देयर इज अनदर सब्जेक्ट कॉल्ड इमेज प्रोसेसिंग, राइट. एंड अगर आपको और भी लेना है तो ऑडियो प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग, देयर आर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट्स. एवरीथिंग जो रिलेटेड टू, जो मैं आपको ये बताया था आज, हर चीज जो है आपको, एवरीथिंग इज नथिंग बट दिस. द इंफॉर्मेशन, द वेरिएबल्स, वन डायमेंशनल एरे क्या, टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल एरे, हाउ यू आर कंप्यूटिंग and analyzing and plotting. Okay, so I'm done my friend from my side. Anybody wants to come and here demonstrate? Who are all ready? इस पे कर सकते हैं, because some of them are online. कॉपी नहीं किया पेन ड्राइव पे? सर वो लास्ट टाइम सेव नहीं किया था, अभी वापस फ्रॉम में. Okay, so that's all from my side. Now those who are attending online, there will be some demonstrations. Anybody is interested in demonstrating, for those who are remotely working? Otherwise, some of your colleagues here, they will demonstrate now. Anybody is coming?
Okay, so what you do is one after another, I will stop the recording and okay, I will keep the recording on. One after another, you come here, share the screen and compile your program and demonstrate. Connect your CPU. I'm just connecting this. Okay, so it's your platform is yours. Sir, I just started the net na. Salary से भी बात करेंगे. इसी में लेकिन सर वो बहुत सिंपल है राइट बहुत सिंपल है उनको क्लियर है और आपने जो भी किया डेमो करना है ना सर उसका वर्किंग कोड जो लिखा है पूरा एक्सप्लेन करना है ब्रीफली ना Can you please share this, please? स्क्रीन शेयर नहीं है ना सो लास्ट टाइम जो सर ने हाँ स्क्रीन शेयर लास्ट टाइम जो सर ने ईसीजी का Not shared on Meet. Can you please share it on Meet?
I will. सो ये सिंपली एक ईसीजी प्लॉटर है, सिंपली एक ईसीजी प्लॉटर है जिसमें हम लोग जो इनपुट देंगे उसके बेसिस पे वो हम लोग को उसका वेव कैसे आएगा वो दिखाएगा। इसमें मैंने पहले तो फंक्शंस डिफाइन किए फॉर पी वेव, टी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये ईसीजी के वेव के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट पी वेव है, इसका मैंने डेस्मो से मैंने देखा इसका ग्राफ कैसे होता है, उसका मैंने फंक्शन लिखा। तो उसका मैंने फंक्शन लिखा सिंपली ग्राफ का, उसको प्रिंट करने के लिए सीरियल डॉट प्रिंट एल। उसके बाद क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स यानी जो अप एंड डाउन करके वेव होता है ईसीजी में, उसका पार्ट है, उसका मैंने सिंपली सीरियल डॉट बिगिन से लिख दिया। और उसके बाद टी वेव होता है जिसमें मैंने साइन वेव यूज़ किया था, या मैंने वही फंक्शन डाला है सेम। और इसका नीचे जो बेस है यानी डिनोमिनेटर, उसके हिसाब से हम लोग उसका छोटा बड़ा कर सकते हैं डिवाइड करके वेव को। इसलिए यार 10 लिया है या 15 लिया क्योंकि ज़्यादा छोटा होता है टी वेव। उसके बाद फिर नीचे सेटअप में सीरियल डॉट बिगिन, और लूप में फिर मैंने स्टार्ट में ये स्टेट डिफाइन किया, क्योंकि अगर इसको डिफाइन नहीं किया ना तो वो हर टाइम जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही प्रिंट करता रहेगा। मुझे ये करना क्या, समझो मैंने एक आउटपुट चाहिए, मुझे मैंने एक इनपुट दिया तो सेम इनपुट जब तक मैं दूसरा इनपुट नहीं देता तब तक वही आना चाहिए आउटपुट। अगर मैंने ये नहीं दिया होता तो वो डिफॉल्ट 0 हो जाता और जो फर्स्ट वेव है वही प्रिंट करता। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ स्टेट करके डिफाइन किया है। इसमें फिर नॉर्मल वेव फर्स्ट स्टेट में, फिर सेकंड में हाइपर कैले में करके डिसीज होता है, उसमें कैसा वेव जनरेट होता है वो मैंने लिखा ही यहाँ। सेम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पी वेव और टी वेव का मतलब इनपुट देके अलग अलग। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक उसका भी लिखा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, प्रीवियस मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये सबका लिखा है। इसको मैं ज़रा चला के दिखाता हूँ। इसका सीरियल प्रोटोकॉल कहाँ होता है? पोर्ट ही खाली नहीं है सर, पोर्ट कौन सा यूज करें? Yeah, procedure is same. Whenever नहीं, you connect. पोर्ट खाली नहीं हाँ, है। अच्छा, खाली नहीं होता। कुछ change the board ESP32. इसमें ये विनायक बोर्ड का दिखा, बोर्ड्स का ऑप्शन कहाँ है? पुराना आईडी DOT ये ना कौन सी हाँ बोर्ड गलत सेट किया।
अरे नोड बोर्ड से DOTS पे थे। हाँ तो एक ओल्डर आईडी है ना, ओल्डर आईडी है सीरियल प्लॉटर। सीरियल प्लॉटर है टूल्स में। हाँ टूल्स में होगा ना। हाँ ये नॉर्मल वेजेस बाय डिफॉल्ट जनरेटर है। इसमें अगर मैं इनपुट चेंज करूँ, लाइक अभी ये नॉर्मल वेव जनरेटर है, ECG में जैसे नॉर्मल वेव आना चाहिए, इसमें अगर मैं इनपुट चेंज करूँ, लाइक मैंने समझो 2 डाला, वेव चेंज हो जाएगा। 5 डाला। Is also made a bidirectional, so that by typing the keyboard, you will get a different articulation signals. मैं 4 डाला इसमें चेंज। That's why program size is a little bit big. उल्टा हो गया वेव। What are the values you have given? Keyboard 1 to 3. I use numbers, yes, 1 to 5. This small example demonstrating just 4 diseases. On the one it has normal value. Good. ECG is a more complicated thing because it cannot be done by one mathematical equation. It's not a sine wave, right? It's a complicated thing. It consists of so many frequency composites. Then that shape will come. But his program is not only one signal. He has a 4-5 hard return. Anybody else? Or questions? अभी रेडी नहीं है।
Then I'll stop. Okay, so we have only one demo right now. Others are still working.